Yeah, good evening, everyone. So I think let us start with our session CA exams reloaded, the next pass. So basically, the idea for this webinar was to give a guidance to the CA students who are preparing for the CA foundation, intermediate, and final examination. And for this, what guidance they need, they have already posted their questions along with the registration forms. And what we already have our speakers who are recent All India rank holders from our own community, so we have requested them to join this call, and they have accepted our request and graced our webinar by joining this webinar. So for before going ahead, I would just like to say something about Bhanushali Chartered Accountants Forum, what BCF is and what BCF is planning to do. So basically, the BCAF, Bhanushali Chartered Accountants Forum, was formed 10 years ago in 2015. It was started by a handful of people who were of the same view that we should be, coming up with some programs and something to guide the students as well as the members who have already cleared the exams are into practice or into service and other avenues. So accordingly, recently we have completed 10 years of our formation, and now we are going ahead with the proper structures, and we are coming up with the various webinars to give guidance to the students as well as the members. So recently we have concluded two webinars for the CA members, and we have also concluded one already we have concluded one seminar or sorry webinar for the CA students, and this is the second one wherein we'll be we will be requesting our speakers to share their journey, their ideas, their thought process on how to go about this CA course. What did they do differently to achieve what they have achieved in their course? And accordingly, this is the second session, and we'll be coming up with the various sessions also. The one more session which is lined up, what I would like to just highlight here to give a small glimpse is that we are already in talks with the good various uh, named speakers for the MSME course. There will be a webinar on MSME points. So basically, it will be helpful for the MSME businesses as well as the tax consultants or chartered accountants who are into MSME practices. So going ahead now, we'll start with our webinar. So before starting the webinar, I would just like to give a small event flow that firstly we'll start with the speaker that is CA Neeta Mao. So the idea of calling her on the webinar is that she has cleared her exams after a long time of 18 years, and she has faced many challenges, and still she has not given up her course and her dreams, and finally she achieved this degree. So we would just like to share her journey with the students so that students can take a leaf from her book, and then you can take inspiration or motivation from her, then how dedicated or determined she was, that she wants to be a CA, and she has done uh, great for the herself by not giving up. That is the main thing. That will be followed by CA. Sorry, it will be followed by Palak Badra, who's our own community's All India rank holder 16 in the CA intermediate level, and she'll be taking up the questions raised by the students on the CA foundation and intermediate courses, and she'll also share her journey and her ideas and what strategy she used to clear her exams with flying colors. The third and the last speaker for the session is CA Shruti Nakwa. She is also recently passed out CA, and she has scored All India rank 50 in the CA final examination in September 2025. So with this, I'll just start with the program by calling out CA Neeta Mao, and would ask her to share her journey, what she had faced, what she did, and what she didn't do, and whatever she has faced, and finally she cleared this exam. So CA Neeta Mao, over to you, please, and welcome to the webinar. Thank you for joining me. Hello, this is Neeta Mao. I had joined the CA course in 2006 and I cleared my first attempt. I cleared my first attempt in 2006 only. In first attempt. મતલબ કે જે રાઉન્ડ જોઈન કયો ઉંજા દોડી રહીને મુજા વિયાવા અને છતાં બી હું પાસ કરે ગઈ હોય.
कोई मुझे अटेम्प्ट आयो ते 2009 में फाइनल जो ने ते 3.5 जी आर्टिकलशिप हूंदी हुई अने 2009 में मूंखे हिकिड़ी क्लस्टर हेडेक करे ने हिकिड़ी मेडिकल कंडीशन अची वई उनजे अंदर आंखे हेडेक थी है क्लस्टर में थी है मतलब के भेगो थी है एंड उन जो पीरियड हूंदो वो मे जर गर्मी वधे एप्रिल में अने जून जूल सॉरी नवंबर अक्टूबर जे अक्टूबर हीट वे ते हेड़ी डिफिकल्ट कंडीशन में मूं वटा थियो न ते भणे जो छता भी आऊं हू एग्जाम ॾींदी हुई से एंड वन मोर थिंग द देयर 2009 में आई हैड अ बेबी बॉय खबर ना है की कयो ते पण कयो ते आऊं कॾहिं बि हारी ने न भगी कि ना न थींदो कि न थींदो ना थींदो अगरि भॻवानु पांखे ॿिए ॾींहुं अखि खोलाए थो न निंदर में जानू मतलब कि हू पांखे पां वटानू की मंगे थो लेकिन की पां वटानू करला मंगे थो जेको पांखे करे जो आहे 2011 में मुंहिंजो फाइनल जो हिकिड़ो ग्रुप ठही वियो अने पोइ मुंहिंजो सन पण स्कूल वञे जो चालू थी वियो नर्सरी जूनियर सीनियर सो आई स्टॉप माई स्टडीज कि हाणे त न थींदो पर बैक ऑफ द माइंड में मुंहिंजे मगज में वो कि जॾहिं 10th करे गिंदो न तेरा पाछो रीअटेम्प्ट करी थी एंड आफ्टर 12 years almost 12 years I restarted my studies 2024 हेॾा बि मूंखे 3 अटेम्प्ट लॻी विया हालांकि मिड़े चेंज हो सिलेबस चेंज हो एग्जाम जी पैटर्न सॼी चेंज थी वई हुई मुंहिंजी राइटिंग प्रैक्टिस हले वई हुई लिखदे बि स्पीड बि हले वई हुई छतां बि ही मिड़े पाछो आऊं करे ने रीगेन कयो अने रेज्यूम कयो मुंहिंजे स्टडी खे नॉट टू शो एनी वन की पण कॉन्कर न करणो मूंखे सिर्फ़ मुंहिंजी जात खे कॉन्कर करणो किन भी परिस्थिति में अगर आई की आई गिव अप नथा करो न ताई किन भी परिस्थिति में आके चाहे न उहा आई खणी सको था हिकिड़ो ज करे जो आहे कि कॾहिं पण गिव अप न करे जो तबियत फिटली आहे वांचियो मन नथो थिए वांचियो ॿियो कमु आहे वांचियो हुन सिवाय कॾहिं की विचारे जो न अगर आके सक्सेसफुल थियणो आहे न त घड़ियाल सामे न नेरियो त आई फ्यूचर में प्राइस टैग नेरे वगैर आई आजी चीजू गिनी सघंदा आ हिकिड़ो च चवंदी प्रभु ते विश्वास अने अगाध मेहनत करीदा न 100% सक्सेस मिले थी 100% अने विथ एडवर्स मेडिकल कंडीशन विथ चाइल्ड एंड हाउस होल्ड वर्क अने इन छतां बि अगरि आई भणी सघो था अगरि आऊं सीए ठही सघां थी न त 100% ऐं जेतिरा बि हेॾा स्टूडेंट्स आहियो न 100% ठही सघो था मूं वटां ठही सघे त कंहिं वटां बि ठही सघे अञा हिकिड़ी आऊं ॻाल्हि चए लाइ मङा थी त ही जेको डिग्री आहे न ही सिर्फ़ु डिग्री न आहे ही पांखे पेशेंस सिखाए थी लाइफ लेसन ॾे थी ही डिग्री पांखे पेशेंस सिखाए थी पांखे मेहनत सिखाए थी डेडलाइन के की कवर अप करे जो हू सिखाए थी त ही लाइफ लेसन ॾे थी हिकिड़ी बार आई सीए ठही विया न तव्हां आज लाइफ में बि सक्सेसफुल ठही वेंदा कोला की आई फक्त भणीने नथा निकिरो ऐं आज पूरा लाइफ जा लेसन खणीने निकिरो था मूंखे ना ख़बर अॻियां आऊं कोर करी थी 100% आई विल परस्यू दिस डिग्री अने ऐं इनमें कम बि करी थी इट विड बी डिफिकल्ट अञा बि मुंहिंजी मेडिकल कंडीशन अञा बि हेड़ी ज आहे आंखे हिकिड़ी ॻाल्हि चवंदी जर 3 नवंबर जो रिज़ल्ट आयो एवरीबडी वॉज सेलिब्रेटिंग देयर सक्सेस जेको पास थी विया हुआ ऐं डॉक्टर वटां थेरेपी गिनी ते कुला की नवंबर चालू हो मुला करे कॾहिं पण गिव अप न करी जा कॾहिं पण गिव अप न करी जा ऐं अगरि पिन ते विश्वास रखंदा न ऐं 100% सक्सेसफुल थींदा थैंक यू Thanks, Nitabin. Thanks for your words. So I would just request participants if they have some doubts or something with respect to what they are facing similar type of challenges, if any or anything. So they can get some guidance from Nitabin. So does anyone have any questions or something on the motivation part of not to give up or what to do other than the study part? Study part will cover up in the second and third part of this webinar.
Okay, fine. So I think there are no questions on this. So let's move on to the second part of our webinar. That is, we'll call upon speaker uh, Palak Bhadra. I would just like to give a small introduction about her as well before starting. So Palak Sambulal Badra, she comes from village Shirwa, and she has been alumni of SIS College, and recently she is in HR College pursuing Bachelor in Accounting and Finance. Recently, she has qualified CA intermediate exam in her in first attempt, and then she has secured a all India rank 16. In CA Foundation as well, she had secured 325 marks out of 400. So she herself is of the view that she is very good at law, accounts, and audit. So we'll start the webinar and we'll request Palak Badra to take up this webinar ahead, and she can share her journey, and also we'll ask the students who have specific queries with respect to the CA foundation and intermediate levels, and she'll be happy to help all the participants. So over to you, Palak. Good evening to everyone. Am I audible? Yeah, you are audible, Palak. Good evening. Okay. So let's start. So सबसे पहले तो I would like to say that कि thank you so much sir for this opportunity. ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मैं मतलब मेरे को ये बड़ी बड़ी गाल चौवाज है कि आऊँ वेबिनार गनाती मतलब कि एक पॉइंट ऐसा था जैर आऊँ पंड स्टूडेंट में वैसे है अजाऊं पंड वेबिनार गनाती तो इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर मी स्टार्टिंग से अगर आऊँ चाह मुझे लाइक स्टोरी तो like around 8-9 months back, I saw a AIR. I met a AIR with me and he guided me throughout. तो उनको देख के मुझे समझ में आया कि नहीं, आई कैन ऑल्सो अचीव समथिंग लाइक दैट. तो ऐसे ही किसी और को देख के यू कैन गेट इंस्पिरेशन. दैट्स व्हाट माय ओपिनियन इज ऑन दैट केस. तो मतलब जब कोई कोई अचीवमेंट कोई कर रहा है तो मतलब बाकी लोग उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से. So let's start with the seminar as a whole. So first of all, from my side, I would like to add certain tips and tricks, which are very important for from my perspective for appearing the examination. So there are many questions on like how to study different subjects, specifically theory subjects. So before like revision part, I would like to add on things like during I have done classes for foundation as well as intermediate examination. So with classes, I used to manage my study part at night or in the morning. In inter examination, I didn't got time to like study like consistently, but I used to take certain time amount of time. So I would like to say that जिसको भी जो प्रॉब्लम होती है ना पढ़ाई रिलेटेड तो लाइक कंसिस्टेंसी मेंटेन करो. आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा ऐसा शुरुआत में इट्स नॉट तुम कैन स्टडी फॉर 3 to 4 hours इन अ डे. नॉट पॉसिबल. So you should start with like little amount. So first day I will sit for 1 hour with the classes or maybe 2 hour. And then slowly, gradually after 1 month, I will like sit for 2 to 3 hours. At this point, I would prefer ki like before my self-study time, my whole syllabus has been covered out. But there are many subjects which still remain untouched. For example, मेरे लिए in my CA inter examination, like SM was the subject जो कि मैंने कभी पढ़ा नहीं था इतना अच्छे से. So that was the subject which I covered in my revision wala section wala part. So there are certain subjects which are quite weak, which you will be able to cover in the revision time period. रिविजन टाइम पीरियड आई मीन लाइक सेल्फ स्टडी टाइम पीरियड जो तुम्हें मिलता है एग्जाम के 2 महीने लाइक एग्जाम के पहले 2 महीने तक का वो सेल्फ स्टडी होता है इन विच यू डोंट हैव एनी क्लासेस एंड यू सिर्फ सिट एंड स्टडी. सो वो टाइम पीरियड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यू शुड प्लान, you should strategize things, you should write down things and just do things in that 2 months. So it's like ये जो 2 महीने थे मेरे जब मैं इंटर की बात करूं फाउंडेशन के लिए भी इट्स लाइक 2 months 1 month का टाइम पीरियड सेल्फ स्टडी का. सो जनरली अगर मैं बोलूं ये जो 2 month का पीरियड होता है ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू जस्ट आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस, कौन सा सब्जेक्ट वीक है मेरा, कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है.
सो ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को छोड़ देंगे, बिकॉज एग्रीगेट में वो हमें मार्क्स अचीव करने में हेल्प करता है, बट जो वीक सब्जेक्ट है उसमें 40 तो लाना ही है एटलीस्ट। तो उसको रेज करने के लिए वी हैव टू फोकस ऑन दैट वीक सब्जेक्ट एज वेल। So, in that case, we have to find out our strengths and weakness in that 2 month ka period. You should, and from my point of view, I tried to accommodate 3 revisions in that 2 months. So, मैंने काउंट किया लाइक आज से लेके अगर हम एग्जाम डेट्स की बात करें, लाइक इंटर एग्जाम्स के लिए देर आर 45 days अराउंड। मैंने 5 दिन ऐसे बफर रखे हैं साइड में, बट देर आर 45 days अराउंड। सो 3 revisions आर पॉसिबल। आज से भी स्टार्ट किया तो मैनी पीपल हैव स्टार्टेड फ्रॉम बैक, बट अगर आज से भी स्टार्ट किया देर आर 3 रिविजन्स पॉसिबल। सो आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि इन 3 रिविजन्स में और क्या क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन रिविजन 1 आई वुड सजेस्ट कि सारे मॉड्यूल्स कवर करो। आई यूज टू प्रेफर ओनली मॉड्यूल। थियोरी के लिए भी मॉड्यूल ही प्रेफर करो। हर एक पेज में क्या लिखा है एटलीस्ट यू शुड नो एंड अंडरस्टैंड what is written in that area, because अब क्या हो रहा है, ICI is playing with languages, like law है, उसकी language जो है ना वो बहुत ही अलग है। So law पे it's like you cannot write your own language, so you should know how to do the things in that manner. So for law, for audit, you should try to read as much as possible, specifically for foundation, because foundation के लिए law is a new subject. तो फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए लॉ को पढ़ते रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रीड द सजेस्टेड आंसर्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट थिंग्स। सो फर्स्ट रिविजन आई वुड सजेस्ट कि मॉड्यूल्स कवर कीजिए सारे। ऑल द नोट्स शुड बी मेड अप टिल रिविजन 1। So in revision 1 you have ample amount of time, like for me I took 5 days each subject for revision 1, because that's the most where I will do all my modules. I will prepare my notes and keep them ready, because I cannot do 500 pages, 1000 pages in 1.5 day for each subject, right? So all the notes should be made up in revision 1 itself. What I did was, for each chapter I said each chapter 5 to 10 pages, 10 pages, whatever the module pages are, I made small summary version of them for myself. So in law, in audit, or in any GST, whatever it is, you just make few short notes for yourself in a short book. So in that case, you can write out all the summarized version of it and keep it with you, like threshold limits हो गए, section number हो गया. So you should keep them revising again and again. For practical subject, formulas हो गए, costing के formulas हो गए, taxation के limits हैं, slabs हैं. So for each chapter, I used to make that notes for me. So whenever I used to study that chapter, as like there are 10 to 15 chapters in one subject, like for GST, there are 15 chapters. So I will read those summary notes and try to understand, no, this is the thing in that chapter. So at the end, in 1.5 day, I will be able to do all the chapters in that 1.5 day period with the help of those notes. So that notes shall be prepared till revision 1. I won't prefer to solve papers in revision 1 itself, because revision 1 for me was to focus on my study part. Because if I don't have the knowledge, what will I write in exam, right? So I prefer to study and complete my syllabus 100% from my side in revision 1. And for me, revision 1 was around 5 days each subject. In revision 2, what I did was I started solving papers. Papers in sense like RTPs है, MTPs है. MTPs मैंने 3 से 4 अटेम्प्ट तक के सॉल्व किए थे. And what I did was I asked my brother to collect all RTPs and MTPs from ICI website or from CA study wala, etc. websites and WhatsApp me. So I had all of them at one place, location. So for me it was easy to access. So ये सब चीजें किसी और से करवा के ले लेने की I would suggest. And what I did was in art revision 2, I understood what are my weak subjects. So for me, in my inter exam, the weak subject was audit,
and law specifically, and SM as well, because theory was weak for me. So what I did, I like in revision 1 or 2, whatever it is, I used to take one subject at a time. But in that one subject, I used to accommodate 1 to 2 hour or 2 to 3 hour daily basis the another subject which is quite weaker of mine. या फिर मैं एक दिन में एक पेपर सॉल्व कर लूंगी. तो दैट विल continuously help me out to basically not feel sleepy or cranky in the whole day. एंड एट द सेम टाइम जब हम रिविजन कर रहे हैं, रिविजन का जो पार्ट होता है ना, इट्स वेरी वेरी लाइक यू कैन नॉट सिट फॉर लाइक लॉन्ग लॉन्ग आवर्स. ये भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, मुझे भी प्रॉब्लम होती थी बहुत बैठने के लिए. सो व्हाट आई डिड वाज कि मैं 1 1 घंटा 2 2 घंटा ही पढ़ती थी सिर्फ. बीच में 5 मिनट का लाइक गैप ले लो, मम्मी से बात करके आओ, वॉक कर लो, डांस कर लो, गाने गा लो. That continuously helped me out. Some people also do yoga and stuff. So these things are very important. In this 40 45 days, you cannot keep on studying continuously. You have to take care of your health at the same point of time. So health was the priority at the same time. In the daytime, I also used to take naps. Like daily का मेरा 15 30 minutes का nap fix था. So that helped me to brainstorm again and again. So yeah, this was my like during this 50 days how I used to study things. And then in revision 3, I said I do 3 revisions. So in third revision tak I got an understanding what are my subjects, which is the weak subject of mine, and I got to know ki where I am lacking. Because जब तुम पेपर लिखते हो, पेपर को चेक भी करोगे, सजेस्टेड आंसर्स चेक करोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा ना कि लाइक वेयर आर यू लैकिंग. सजेस्टेड आंसर इतना अच्छे से लिखा हुआ है, मैंने अच्छे से नहीं लिखा. तो खुद से टेस्ट करना है, खुद से चेक करना है. देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अब पेपर लिखने के टाइम पे क्या गलतियां हो रही हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक एसएम में मैं एग्जाम्पल्स नहीं लिखती थी. लाइक एक सब्जेक्ट है इंटर का एसएम, तो उसमें मैं एग्जाम्पल्स नहीं लिख पा रही थी, तो वो समझ में आया कि नहीं लिखना है अब से मुझे. तो सेकेंड रिवीजन तक आइडेंटिफाई कर लिया कहाँ गलतियां हैं. लाइक आईसीआई का बेंचमार्क क्या है और मेरा बेंचमार्क क्या है. मैं नीचे हूँ, आईसीआई बहुत ऊपर है. सो आई कैन ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं रेज करूं अपने आप को आईसीआई के आंसर्स को मैच करने की. सो आई ट्राई टू डू दैट एंड ऑल्सो ट्राइड कि थर्ड रिविजन में मैंने ये सब ट्राई किया, पेपर्स और सॉल्व किए. फिर जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगा सिर्फ वही किया. फिर मैंने हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं दिया, बिकॉज देयर आर ओनली 5 to 10 days लेफ्ट आउट. तो सिर्फ जो सब्जेक्ट मुझे डिफिकल्ट लगने लगे उसी पे ध्यान दिया. लाइक बहुत कम मार्क्स मिल रहे थे क्लासेस के मार्क्स में, अगर किसी में कम मिल रहा था उस पे ध्यान देना. दिस इज हाउ यू शुड entirely cover those 50 to 60 days for your study. And um, apart from it, I would like to say that कि एग्जामिनेशन के ऊपर बोलूंगी मैं कुछ. सो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ना, यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस. Like what happened with me in my exam center was that there was no bench for me in my exam hall. Like I went in my first paper in accounts in my inter, like 2 months back, and I found that there is no bench for me to write, sit and write. So I asked the coordinator, where is the bench? मेरी मैं पैनिक कर गई बहुत ज्यादा, बिकॉज सब लोग बैठ रहे हैं, बिकॉज देर इज 15 minutes का रीडिंग टाइम एंड ऑल. तो मेरे को तो बहुत ज्यादा लाइक एकदम पैनिक हो गई मैं कि क्या करना है, कैसे करना है. पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी. So I asked coordinator, I went there and asked for it. It was a panic moment, but at the same time, it was like, nahin, I have to calm down, because at the end, it's me who will write the paper. At the end, मुझे 3 घंटे ही मिलने वाले पेपर लिखने के लिए. So throughout the thing, it was I got the bench and I like sat and write the paper. But problem ये था कि तुम ही हो जो खुद को मोटिवेट करके रखेगा थ्रू आउट द टाइम पीरियड. चाहे लोग कितना भी मोटिवेशन या मोटिवेशन स्पीकर बन जाए या कुछ और से सुने तुम लोग, बट एट द एंड इट्स यू हु विल मोटिवेट योरसेल्फ. सो मेरा मोटिवेशन मैं खुद थी, मेरी मॉम डैड थे बेसिकली. तो मैं एग्जाम हॉल में हमेशा अपने आप को कंटिन्यूसली यही बोलती थी, लाइक अगर 1 घंटा हो गया एग्जाम को लिखते हुए,
तो आई यूज टू से नहीं, आई हैव टू गियर अप, पलक फास्ट हो जा, नहीं पेपर छूट जाएगा, पेपर छोड़ना नहीं है, 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना ही है। तो इट्स ऑलवेज यू, तुम्हें कभी हार नहीं माननी एट द एंड, तुम्हें अपने आप को मोटिवेट करते ही रहना है कंटिन्यूअसली। एग्जाम हॉल में बैठे हो चाहे घर पे प्रिपेयर कर रहे हो, कंटिन्यूअसली यू हैव टू पुश योर सेल्फ, ताकि तुम वो अचीव कर सको चीजें। एंड ऑलवेज देर इज अ थिंग जो तुम्हें पुश करते रहेगा। फॉर मी दैट सीए, एक सीए पलक भद्रा लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो देख के ही मुझे एकदम गूजबम्स आ जाते हैं। तो दैट इंस्टेंट बूस्ट मी आउट टू लाइक, हाँ पढ़ूंगी, ठीक है पढ़ूंगी, नहीं आ रहा, नींद आ रही है फिर भी पढ़ूंगी। एग्जाम में लाइक 2 घंटे हो गए हैं, ओनली 60 मार्क अटेम्प्ट हुआ है, फिर भी 40 कैसे भी करके कवर करूंगी। सो तुम्हारे लिए भी कुछ होना चाहिए कि नहीं मुझे ये चाहिए, चाहे कुछ भी हो, बट तुम्हें वो एक रखना चाहिए हमेशा, एक गोल, एक सेट बार करके कि इसके लिए तो सीए बन के ही रहना है। So that will always push you. And again, एग्जाम हॉल में भी आई ऑलवेज यूज टू लाइक चैंट की लाइक भगवान जी माता जी रक्षा करना ये वो। सो एट द एंड इट विल ट्राई टू बूस्ट यू आउट कुछ ना कुछ तरीके से। तो तुम पेपर लिख ही लोगे, बट अगर तुम खुद से ही बोलोगे कि नहीं ठीक है 60 मार्क का ही लिखना है, 70 का ही लिखना है, तो 60-70 ही लिख पाओगे। ऑलवेज टारगेट फॉर बिग, तब जाके कहीं ना कहीं तुम्हें 60-70 आएगा। सो जिसने भी मुझे बोला रैंक कैसे लाना है, क्वेश्चंस थे बहुत सारे, रैंक कैसे लाना है ये वो, मार्क्स कैसे स्कोर करे, ऑलवेज अचीव गो फॉर लाइक 100 मार्क का पेपर। कुछ भी हो जाए, हैंड राइटिंग इज नॉट लाइक प्राइमरी थिंग, ठीक है, यहाँ पे हैंड राइटिंग चलेगा, बस कुछ चीजें हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल सेक्शन नंबर लिखना, अंडरलाइन करना चीजों को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम कोई भी सब्जेक्ट लो, लॉ लो, अकाउंट्स लो, कोई भी, मैं हर एक सब्जेक्ट में जहां मुझे मिलता था ना, मैं अंडरलाइन कर देती थी। सेक्शन नंबर है अंडरलाइन कर लो, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये सारे अंडरलाइन कर देती थी। कंक्लूजन मुझे लगा कि नहीं मेरा अजम्पशन कहीं लिखा है मैंने, उसको अंडरलाइन कर देती थी। आई वॉन्ट द चेकर टू चेक दैट थिंग फॉर मी। तो वो सब कुछ अंडरलाइन करके पेपर को भर दो, that will help you to gain marks in much better manner. और अगेन आई वुड से कि अगर एग्जाम रिलेटेड कुछ चीजें बोल रही थी ना, तो इट वाज कि आंसर्स हर एक क्वेश्चन के अलग अलग जगह लिखना। व्हाट हैपेंस इज, और आंसर पहले लिखना, वर्किंग नोट बाद में लिखना, बिकॉज ये चीज एज अ फाउंडेशन स्टूडेंट मुझे पता नहीं थी। एंड मैंने वर्किंग नोट्स पहले बनाती गई फ्लो फ्लो में, एंड आंसर पीछे था मेरा। जब मैंने लाइक मतलब ये मेरे साथ नहीं, मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था। सो जब हमारे आंसर शीट मंगाए हम लोगों ने आरटीआई के थ्रू, तब हमने देखा कि उसका 5 मार्क का क्वेश्चन चेक नहीं हुआ था, अकाउंट्स का। सो इट वाज लाइक बहुत अच्छा नहीं लगा हम लोग को, बिकॉज वो पूरा सही था एंड वो फिर भी मार्क्स नहीं मिले। द रीजन वॉज वर्किंग नोट चेक किया, 0.5 मार्क दिया, बट मेन आंसर चेक ही नहीं किया। सो ये छोटी छोटी गलतियां जो सीनियर्स ने कर दी हैं, वो तुम ना करो तो अच्छा होगा, लाइक बिकॉज मेन आंसर्स पहले लिखो एंड बाद में वर्किंग नोट्स लिखो, हर एक का अलग अलग लिखना, तो ये गलतियां ना करिए तो बेटर है। फिर एग्जाम हॉल का तो लाइक बोला मैंने कि लाइक एकदम आराम से लिखना, शांति से। फिर वो टाइमिंग का भी, मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, 1.5 लाइक 300 लाइक नहीं 300 नहीं 3 घंटे होते हैं। सो व्हाट दे डू इज दे डिवाइड द मार्क्स, 100 मार्क का पेपर है तो 1.5 मिनट ईच कर करके करते हैं। आई डोंट प्रेफर दैट टू बी ऑनेस्ट फॉर टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज आई फील कि वो 1.5 मिनट्स पर मार्क कर कुछ कैलकुलेट करते करते ही मेरे 5 मिनट निकल जाएंगे। सो व्हाट आई यूज टू डू इज आई यूज टू सेट टारगेट्स, लाइक आधे घंटे में इतना मार्क का हो जाना चाहिए, 1 घंटे में इतना हो जाना चाहिए, 2 घंटे में एटलीस्ट मेरे 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन एकदम बेस्ट वाले है ना वो हो जाने चाहिए। So this was my strategy from my side, how I used to do it, as well as for MCQs as well. In like inter 30 marks MCQs, I used to put that 30 mark in between. तो पहले थियरी सॉल्व किया मैंने, लाइक क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए अराउंड 15-20 मार्क्स के, सपोज 5 क्वेश्चन है, मैंने 3 सॉल्व कर दिए क्वेश्चंस 1.15 के अंदर अराउंड, एंड बाद में आई यूज टू टेक MCQs in between, so it will give me a good grip on them.
एंड देन अगेन आई यूज टू गो फॉर लाइक 2 क्वेश्चंस जो बाकी है वो. सो इन दैट मैनर आई यूज टू कवर अप ऑल द थिंग्स. सो 1.5 मिनट का ट्रैकर नहीं रखती थी मैं, बट एट द सेम टाइम आई यूज टू कीप ट्रैकर ऑन क्वेश्चंस कि 3 क्वेश्चन हो जाने चाहिए, इतने मार्क का हो जाना चाहिए, लाइक 60 मार्क्स का अप्रोक्स 2 घंटे 2 घंटे में हो जाना चाहिए, बेस्ट 60 मार्क्स, लाइक ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता ऐसे वाला. तो दैट यूज टू बी माई स्ट्रैटेजी. एंड रीडिंग टाइम तो मिलता ही है एग्जाम में, नो डाउट, बट देर आर सर्टन केसेस की रीडिंग टाइम कभी कभी नहीं दे. पॉसिबल नहीं है नहीं मिलना, बट इन माई केस इट हैपेंड कि लाइक हमारा 10 मिनट का टाइम नहीं दिया हम लोग को, क्वेश्चन पेपर लेट आए फ्रॉम आईसीआई. तो वो डिस्क्रिपेंसीज हो सकती हैं कहीं पे भी. एंश्योर कि उसकी वजह से पैनिक ना करो, तो पहले से पता हो तो बेटर है ये चीजें. देन आई वुड लाइक टू एड ऑन हर एक सब्जेक्ट वाइज फॉर फाउंडेशन एंड इंटर. तो हर एक सब्जेक्ट कवर करेंगे हम. तो लेट्स बिगिन विद फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स. तो अकाउंट्स के लिए आई वुड से दैट पार्टनरशिप एंड कंपनीज एक्ट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट one. And accounts की theory is also very important for foundation, because there are chances कि 10 to 15 marks की theory आती है. What people do is theory देख के skip. No, it's not the case. Theory easy होती है, and जितना भी लिखा जो तुम्हारी 12th की knowledge है उससे it will give you marks. So do attempt the theory and how to accounts तो practice करके ही होगा, and mostly syllabus 12th का ही होता है, तो अकाउंट्स में इतना डिफिकल्टी नहीं आती बच्चों को. वेयर इन लॉ, लॉ इज लाइक न्यू टू यू गाइस. तो इसको कैसे क्रैक करें, तो सबसे पहले तो चैप्टर्स की बात करूं तो मैम चैप्टर 1 जो कि 6 मार्क का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो वो करना ही चाहिए आई फील. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 30 मार्क क्वेश्चन है, 30 मार्क्स आते ही हैं एग्जाम में, बट वो काफी लेंदी हो जाता है सच, बट स्किप नहीं करने का कभी भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही है. सेम गोज फॉर कंपनीज एक्ट एंड नेगोशिएबल एक्ट. नेगोशिएबल एक्ट इज फॉर 14 मार्क्स, एंड इतना इजी लाइक 10 to 12 पेजेस का चैप्टर है, एंड विल गिव यू 14 to 15 मार्क्स. तो फॉर मी एज अ फाउंडेशन स्टूडेंट मेरा तो टारगेट यही था कि ये 2 चैप्टर तो मेरे को करने ही है. लाइक हमें एंड में सिखाया था, लास्ट चैप्टर है सबसे, तो व्हाट पीपल डू स्किप कर देते हैं, बट फॉर मी इट वाज द टारगेट सब्जेक्ट, टारगेट चैप्टर सॉरी. तो मैंने वो चैप्टर से मार्क्स पकड़ के रखे कि नहीं इसमें तो लाने ही है मार्क्स. तो ऐसे करके यू कैन डेफिनेटली स्कोर मार्क्स. बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज इज फॉर लॉ, मॉड्यूल इज द की. मॉड्यूल को ही रीड करना है, मॉड्यूल को ही समझो, एंड एज अ न्यू बिगिनर लॉ को टाइम दो. तो मैंने टैक्समैन रीड किया था थ्रू आउट, बिकॉज थिंग वॉज लाइक लॉ को लिखना कैसे है, लाइक एज अ स्टूडेंट कैसे लिखूं मैं वो 3 पैराग्राफ फॉर्मेट में. तो दैट वॉज वेरी न्यू टू मी. एंड कैसे अजम्पशंस, बिकॉज हर एक लाइक टैक्समैन अलग आंसर दे रहा था, आईसीआई का सजेस्टेड आंसर अलग दे रहा था, तो हाउ टू इंटरप्रेट लॉ, दैट वॉज ऑल्सो वेरी important. So what I did was I used to read like ICI के suggested answers. मैंने लिटरली लॉ लाइक फाउंडेशन में अराउंड 8-10 अटेम्प्ट के, लाइक एमटीपी वगैरह, लाइक स्टार्टिंग से, लाइक बस में बैठ के पढ़ते रहो, ऐसा कुछ भी रीड करते रहो थोड़ा सा, तो एटलीस्ट समझ में आएगा कि लिखना कैसे है लॉ को. तो रीड करोगे तो समझ में आएगा, एंड देन लिखो भी उसको खुद से, तो वो इजी पड़ेगा लिखना समझना. एंड सेक्शन नंबर कोड करना, तो सेक्शन नंबर कोड करना इज नॉट लाइक इजी, लाइक इजी नहीं है, बट हमें याद करना पड़ेगा सेक्शन नंबर. केस लॉज है, सेक्शन नंबर है, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसकी वजह से मेरे को तो लगता है कि मेरे इंटर में भी और मेरे फाउंडेशन में भी बिकॉज ऑफ सेक्शन नंबर मुझे मार्क्स मिले हैं. बिकॉज चेकर को क्या चाहिए, चेकर विल सी दैट अच्छा सेक्शन कोड किया है, हाँ एक्ट कोड किया है, कौन से एक्ट का है ये लॉ, ठीक है, एंड देन वो हाईलाइटेड जो मैं अंडरलाइन करती हूँ वो रीड करके मार्क्स दे देगा. तो उसके लिए भी काम इजी, हमारे लिए भी काम इजी, मार्क्स मिल जाते हैं. एंड मैंने देखा है लिटरली, मैंने आरटीआई देखा था एक बच्चे का जिसमें लिटरली फुल फुल मार्क्स भी मिले हैं लॉ में, ऐसा नहीं है नहीं मिलते, मिलते हैं. इट्स ऑल इज सेक्शन नंबर कोड करो. तो फर्स्ट पैरा में सेक्शन कोड किया तुमने, 3 पैराग्राफ फॉर्मेट का आंसर होता है. पैरा 1 सेक्शन नंबर कोड करो एंड एक्ट कोड करो कि किसका है, सोगा का है, पार्टनरशिप का है, किस स्टडी, तो वो कोड किया.
उसके बारे में ब्रीफिंग लिखा कि ये लॉ क्या बोलता है। एज इट इज वर्ड्स की जरूरत नहीं है, वी कैन लाइक ब्रीफ इन लाइक इन आवर ओन वर्ड्स बट विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूल लैंग्वेजेस। लाइक जो की वर्ड्स है तो वो मॉड्यूल की होंगे, वी कैन नॉट चेंज द लॉ। थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं अगर लाइक 5 करोड़ 50 करोड़ 500 करोड़, तो वो वही रहेंगे। इट्स जस्ट लैंग्वेज चेंज होगी थोड़ी बहुत, तो वो चलता है इतना। सेकेंड पैराग्राफ में यू हैव टू एक्सप्लेन द क्वेश्चन अगेन कि व्हाट हैपेंड इन दैट केस। तो वो क्वेश्चन ही रिपीट करो बट इन अ शॉर्टर लैंग्वेज, इन अ शॉर्टर वर्जन। एंड लास्ट में कंक्लूजन। सो व्हाट हैपेंड इन आवर अटेम्प्ट कि देयर वर मल्टीपल क्वेश्चंस। लॉ का पेपर वाज सो लेंदी in our attempt like September 2024. So we were expecting 4 to 5 mark, 6 mark question from ICI, but ICI gave us like 3 mark, 2 mark questions, and each of them was case study. So I like it was difficult like इतना बड़ा पेपर खत्म करना एट अ टाइम लाइक 3 घंटे के अंदर अंदर। बट व्हाट आई डिड, मैंने 3 मार्क के लिए भी 3 पैराग्राफ फॉर्मेट यूज किया, 2 मार्क के लिए भी 3 पैराग्राफ फॉर्मेट यूज किया। तो 3 पैराग्राफ फॉर्मेट को छोड़ा नहीं, हर एक क्वेश्चन हर एक आंसर के लिए वही 3 पैराग्राफ फॉर्मेट। इससे आई गेस बिकॉज ऑफ दैट इट वाज अ गुड प्रेजेंटेशन फॉर द चेकर टू चेक, एंड बिकॉज ऑफ विच मुझे लॉ में काफी अच्छे मार्क्स मिले। So I feel that should be done by you guys as well. And then going towards maths and economics. So for maths what I did was कि मैंने पहले तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस एक बार तो सब कर लिए, अब सब क्वेश्चंस रिपीट तो हम कर सकते नहीं इतने सारे। मैथ्स में थिंग इज लाइक पेपर सॉल्विंग। I started in revision, in my revisions, I did 2 revisions for foundation. So in my revision itself, I started with formulas. Like I used to read formulas एक बार and then start with papers. Because I know module एक बार कर लिया है, मॉडल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट विथ पेपर्स। पेपर्स में मैंने सारे एमटीपी आरटीपी सॉल्व किए। आई प्रेफर्ड आकाश अग्रवाल। आकाश अग्रवाल यूट्यूबर है एक, जिसके रैपिड क्वेश्चंस या क्विक रिवीजन क्वेश्चंस आते हैं। आई डिडंट स्टडीड फ्रॉम हिम बट आई ओनली प्रेफर्ड हिज 100 क्वेश्चंस 200 क्वेश्चंस का वो सीरीज। सो दैट एक्चुअली हेल्प मी एंड आई सॉ कि कितने 10-12 मार्क के क्वेश्चन सेम उसके जो वीडियो में थे वो एग्जाम में आए थे उसी टाइप के। तो दैट कैन बी प्रेफर्ड अगर टाइम है तुम्हारे पास। और लाइक पहले तो मॉड्यूल करना चाहिए एंड एमटीपीज करने चाहिए, बट अगर टाइम है तो वो 100 क्वेश्चंस का एक हाथ वीडियो तुम अगर खुद से सॉल्व करो तो इट इज बेनिफिशियल, आई वुड से। एंड देन इकोनॉमिक्स भी आई प्रेफर की लाइक हर एक सब्जेक्ट एज अ होल करना चाहिए, लाइक पूरा मॉड्यूल 2 बार तो एटलीस्ट पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट 2 टाइम्स। बिकॉज व्हाट हैपेंड इज इकोनॉमिक्स में एमसीक्यूज वो कोई भी लाइन उठा के एमसीक्यूज दे देते हैं। सो फॉर इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज आर्टिकल नंबर्स, सेक्शन नंबर्स, कोई भी चैप्टर के किधर के भी आर्टिकल नंबर भी एमसीक्यूज में आ सकते हैं तुम्हें। सो एंश्योर कि एटलीस्ट एक बार रीड किया हुआ हो ऐसा कुछ तो तुम उसको आंसर कर सको। that was like my strategy in my foundation, and like how to solve it. तो I told about law कि कैसे paragraph 3 में लिखना चाहिए paragraph में, whereas in maths and economics what I did was मैं एक एक क्वेश्चन करके फिर वो एमसीक्यू की बुकलेट में मार्क नहीं करती थी। what I did was मैं 10 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस एट अ टाइम लेती थी एंड देन आई यूज टू सॉल्व देम। लाइक सब मैं तो क्वेश्चन पेपर पे ही करती थी, टू बी ऑनेस्ट। नहीं करना चाहिए क्वेश्चन पेपर पे, लिखा होता है कि नॉट अलाउड, बट आई यूज टू लाइक विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल आई यूज टू लाइक साइड में छोटा सा मार्क कर दो। कोई लाइक स्ट्रिक्ट चेकर होगा तो लाइक वो ना बोलेगा ये सब करने के लिए, बट अगर लीनियंट हुआ तो चल जाएगा। व्हाट आई डिड कि मैंने 10-10 क्वेश्चंस 20-20 क्वेश्चंस ऐसे लाइक साइड में सॉल्व करके उधर ही मार्क किए क्वेश्चन पेपर पे। एंड देन आई वेंट टू लाइक एकदम स्मॉल डॉट्स, हाँ, एंड देन आई वेंट टू एमसीक्यू बुकलेट एंड देन मार्क्ड आउट। दिस हेल्प मी टू इंक्रीज माई स्पीड एज वेल। एंड वो ट्रैक भी रहता है कि नहीं 10 क्वेश्चन 10 मिनट हो गए ना वॉच में, तो 10 क्वेश्चन एटलीस्ट ग्लांस कर लिया। 20 मिनट हो गए, हाँ 20 क्वेश्चन हो गए हैं, देख के हो गए हैं, इसमें से अटेम्प्ट भले ही मैंने 15 किया है बट 20 क्वेश्चन आंखों से चले गए बस। So that can be the strategy, and do solve the papers at home. That is preferred. And let's go towards intersection. So intermediate के लिए like what I did for each subject, let me focus on that.
So first of all, अकाउंट्स. तो अकाउंट्स में थिंग वाज लाइक जो मेन चैप्टर्स हैं, कंसोलिडेशन हो गया, अमालगमेशन हो गया, ये सब तो वेरी इंपॉर्टेंट. ये हर एक लाइक देर आर 5 to 6 चैप्टर्स हार्डली विच आर लाइक फुल फ्लेज 14 मार्क सम्स. तो दैट शुड नॉट बी द केस की ऑप्शन, वो पूरा करना ही है. एंड सेकेंडली, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर सो मेनी, लाइक 20 to 25 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं सिलेबस में. अकाउंट्स का सिलेबस इज वेरी मच ह्यूज. बट थिंग इज लाइक सब कुछ करने के बाद ही यू कैन लाइक एम टू हैव लाइक फॉर लाइक कंप्लीट द पेपर लाइक 100 मार्क का. अगर नॉलेज नहीं है कोई भी चीज की तो 100 मार्क का पेपर सॉल्व नहीं होगा. सो इसीलिए पूरा सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट आई डिड, मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे लाइक थियोरी बेस्ड वाले, वो मैंने लाइक पहले नहीं किए थे लाइक इन माय क्लासेस एंड ऑल. तो मैंने एग्जाम के लाइक रिविजन वन में देर इज अ प्रोफेसर इन यूट्यूब लाइक आकाश कंदोई सर. सो आई प्रेफर्ड हिम. मैंने उनसे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाइक मैंने यूट्यूब पे जो फ्री ऑनलाइन मिलते हैं तो मैंने वो सीखे थे. एंड उधर सब किया था, उनका सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने रिवीजन वन के टाइम लाइक अराउंड लाइक 40 डेज बाकी था एग्जाम को, 45 डेज. तब मैं रात को एक एक हर रोज मैं एक एक स्टैंडर्ड करती थी एएस. तो उससे एक अच्छा ग्रिप मिला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे. एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए आई वुड लाइक टू से अगेन 3 पैराग्राफ फॉर्मेट थियरी क्वेश्चंस होते हैं. वो कुछ थियरी होता है, कुछ कैलकुलेशन वाले होते हैं. कैलकुलेशंस आर इजियर, बट फॉर थियरी आई वुड से जो 3 पैराग्राफ है तो फर्स्ट ऑब्वियसली कोड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर बाद में डिटेल्स दो उनके, एंड देन एक्सप्लेन द केस स्टडी और सिनेरियो एज अ बोल. या फिर अगर कैलकुलेशन है, वर्किंग नोट है, देन यू कैन डू दैट इन दैट एरिया. तो वो अच्छा हो जाता है लाइक. एंड लास्ट में कंक्लूजन आ जाएगा विद अगेन द आंसर, हाईलाइट द आंसर कि लाइक दिस इज द आंसर ऑफ दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. इट विल हेल्प यू आउट इन अ गुड मैनर. देन फॉर लॉ, व्हाट आई डिड फॉर लॉ, अगेन आई मेड द चिट्स, आई मेड द पेजेस. मैं हर एक चैप्टर के लिए वो पेजेस बना के रखती थी एंड उस मॉड्यूल में रख देती थी. आई नेवर प्रेफर आई यूज टैक्सेशन taxman for law and audit, like for understanding like question answer, how to write the answer and how to write the questions like basically. बट कभी मैंने सिर्फ उस पर रिलाई नहीं किया. आई ऑलवेज प्रेफर मॉड्यूल फॉर लाइक लर्निंग पार्ट. फिर क्वेश्चन आंसर्स के लिए आई यूज्ड दिस लाइक अंडरस्टैंड टैक्समैन भी मैंने पूरा रीड कर दिया था. विवित्सु भी होता है ऑनलाइन अवेलेबल, तो वो भी मैंने एक बार ग्लांस किया था. बट फॉर ऑडिट, फॉर लॉ आई प्रेफर्ड ओनली टैक्सेशन, टैक्समैन अपेरेंटली. एंड उसमें अगेन देर इज 3 पैराग्राफ फॉर्मेटिंग. एंड फॉर लॉ आई वुड से जो मॉड्यूल 3 है, जनरल क्लॉज एक्ट की, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट की एंड फेमा की, तो ये 3 चैप्टर, फॉरेन कंपनी, ये 4 से 5 चैप्टर आर सो इम्पोर्टेंट लाइक इट विल कवर 30 to 35 मार्क्स पूरा. सो व्हाट आई डिड, मैंने इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से किया. मतलब कि ड्यूरिंग रिविजन टाइम आई अंडरस्टूड कि दिस चैप्टर्स आर वीक. तो मैंने रिवीजन में ज्यादातर उन पे फोकस किया rather देन बाकी जो कंपनीज एक्ट है 70 मार्क का. बिकॉज दैट चैप्टर लाइक वो पता है कि वो मार्क्स देगा भी, बट वो है डिफिकल्ट एज सच. तो वो फोकस करना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एट दैट टाइम. तो मैंने वो सब किया. एंड उसके भी लाइक मैंने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, एक सीए बडी शुभम सिंगल करके एक है यूट्यूबर, मैंने उनके सिर्फ नोट्स यूज किए थे फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. बिकॉज उनके नोट्स आर वेरी प्रिसाइज आईओएस के लिए. लाइक मतलब मॉड्यूल की लैंग्वेज तो मतलब मुझे समझ में आती नहीं थी इतनी आईओएस की. सो आई रेड दैट 3 times 4 times अराउंड. बट स्टिल आई यूज टू लर्न द थिंग्स, आई यूज द नोट्स ऑफ दैट शुभम सिंगल जो यूट्यूब पे लाइक फ्री ऑफ लाइक अवेलेबल था. देन फॉर टैक्सेशन लाइक जीएसटी के लिए अगेन आई मेड माई समरी नोट्स छोटे छोटे. लाइक आई मेड अ चार्ट ऑफ द टीडीएस टीसीएस फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन एज वेल एज फॉर जीएसटी. आई रोट ऑल द सेक्शन नंबर्स बिकॉज फॉर जीएसटी, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर जीएसटी आई वुड से जीएसटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रैक्टिकल थियरी. तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो चाहे थियरी क्वेश्चन हो, in both the cases I used to like code sections. So even if there is a 10 mark question, GST में सबसे पहला क्वेश्चन 10 मार्क का होता है, that is पूरा कैलकुलेशन नेट लाइबिलिटी.
तो इवन इन दैट द थ्री डब्बास, दैट फर्स्ट वन वाज आउटपुट लाइबिलिटी, तो वो निकाल आउटपुट लाइबिलिटी निकाला, फिर बाद में आईटीसी निकाला, एंड देन नेट ऑफ किया। तो वो अच्छे से प्रेजेंटेशन करना इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज दैट वाज लाइक आई फेल्ट जीएसटी वाज माय कोर, डायरेक्ट टैक्स वाज माय वीकर सेक्शन, वीकर पार्ट, बट जीएसटी मेरा कोर था। इसीलिए आई ट्राइड कि लाइक मैं 1 hour 40 minutes दे सकती हूँ अराउंड फॉर जीएसटी, बट जीएसटी के 50 मार्क्स अच्छे से लिखने हैं मतलब। So even if it took time to me to like code, like वो अलग अलग boxes बनाना presentation wise, but I did that because it helped me out eventually. And even in that, you should write below कि why the ITC is not available, reasons why the ITC is blocked. So that will eventually help you out. GST is completely like there are 15-14 chapters around in GST, but each chapter is interlinked with each other. So you cannot skip any chapter as such. So it is important to cover each and every portion of it. Specifically, to be honest, time of supply, value of supply, and place of supply. These three chapters are very famous for theory part. 5 marker theory आती है, तो वहां पे भी 3 पैराग्राफ फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे तुम सेक्शन नंबर कोड करो, तुम कौन सा एक्ट सीजीएसटी का है कि एसजीएसटी का है या फिर आईजीएसटी का है, वो कोड करो। सो हमारे सिलेबस में मोस्टली सीजीएसटी एक्ट ही है, बट सिर्फ प्लेस ऑफ सप्लाई वाज आईजीएसटी, तो वो इंश्योर करो कि वो सही लिखो तुम। फिर अगर टू बी ऑनेस्ट सिर्फ अगर सेक्शन नंबर सही है ना तो ही लिखना, वरना सेक्शन नंबर मत लिखना, मार्क्स 0 मिलेगा अगर गलत सेक्शन कोड किया तो सेक्शन नंबर अगर पूरा आता है तो ही लिखना, वरना मत लिखना, आई वुड सजेस्ट। चलेगा सेक्शन नंबर नहीं लिखा तो, एज पर सेक्शन, एज पर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, if you don't write the section, you should use the words like as per provisions of Companies Act, as per provisions of CGST Act. This is the language you should start your answer with if you don't mention section number. And it is normal to not write a section because there are many students जो section नहीं लिखते फिर भी काफी अच्छा स्कोर करते हैं. It is not that problem, but I used to prefer to at least try to accommodate एक दो section भी अगर पेपर में दिख रहा है, it will create a good impression. इसीलिए I used to like read and learn section numbers. मेरा पर्पस सिर्फ उतना ही था section number लिखने का. फिर for GST, I would like to also say कि GST के amendments are very important. कितने amendments दो अटेम्प्ट के वो अच्छे से करके जाने के, बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी अमेंडमेंट्स इन जीएसटी, एंड वो अमेंडमेंट्स एग्जाम में आते हैं, एमसीक्यूज में हो चाहे कहीं पे भी हो, दे विल ट्राई टू पुट अमेंडमेंट्स इन टैक्सेशन सब्जेक्ट. सो आई ऑल्सो सॉ कि मैंने एक दिन पहले अमेंडमेंट शीट देखी थी, उसमें से आई फेल्ट कि 4 से 5 मार्क का मेरे एग्जाम में आया था. सो आई फेल्ट वेरी लकी कि हाँ मैंने ये चेकआउट किया सारे अमेंडमेंट्स, बिकॉज इट हेल्प मी इन नेक्स्ट डे immediately. So that was my approach for GST as a whole. For direct tax, I would say कुछ chapters हैं जो कि fix हैं, आते ही हैं. So I was like इधर से marks तो achieve करने ही हैं. That is अपना residential status हो गया, TDS TCS है, तो 6 मार्क रेसिडेंस के मिल गए मुझे, उसमें भी मुझे थियोरी लिखनी है 3 पैराग्राफ फॉर्मेट. तो एक बार अगर 3 पैराग्राफ फॉर्मेट में मास्टरी कर ली ना, लाइक वो प्रैक्टिस करो लिख के, बिकॉज अनलेस यू राइट यू विल नॉट गेट कॉन्फिडेंस. बिकॉज अगर मैं अभी सोच रही हूँ कि हाँ 3 पैराग्राफ लिख दूंगी, बट एग्जाम में वो याद नहीं आता है कैसे लिखना है, फिर हम ब्लैंक हो जाते हैं कि अब कहाँ से स्टार्ट करूं, अब इस पैराग्राफ में क्या आएगा, अब इधर क्या लिखूं. सो जब तक लिखोगे नहीं तब तक ग्रिप नहीं बैठेगा. फाउंडेशन में लिखा, अभी लिखा, इंटर में लिखा, हर सब्जेक्ट के लिए लिख रहे हो, तो वो ग्रिप बैठ ही जाती है कैसे लिखना है करके. इट विल इवेंचुअली इंक्रीज एंड बूस्ट आउट योर कॉन्फिडेंस. So it is important to write and practice each and everything. And then TDS का भी 4 मार्क का क्वेश्चन आता ही है. So TDS के रेट्स, TDS के थ्रेशोल्ड्स वाज लाइक मैंने वो लर्न कर लिए थे, ताकि बिकॉज आई फेल्ट कि 4 मार्क क्यों गवाना, तो मैंने तो कर दिया था वो. फिर लास्ट में क्लबिंग एंड सेट ऑफ के भी 6-6 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में. सो दैट इज ऑल्सो अ गुड एरिया टू स्कोर एंड इजी एरिया एज वेल. फिर बाकी जो सैलरी है, पीजीपीपी है, वो सब के नॉलेज तो पूरी रखी थी मैंने, लाइक सब कुछ मतलब मैंने रीड आउट करके रखा था, लिख खुद से प्रैक्टिस करते थे. फुल फ्लैश 15 मार्क का जो सम आता है टैक्स में, डीटी में,
वो भी अच्छे से प्रैक्टिस करके रखा था। तो ऐसे फ्लो पता होना चाहिए कि कैसे वो फ्लो स्टार्ट होगा, कैसे पोस्टिंग होगी, लाइक पीजीबीपी में कहाँ से क्या जाएगा, लाइक कैसे इधर से मैं बाहर, लाइक नेट प्रॉफिट है तो उसमें क्या एड बैक होगा, क्या डिडक्ट होगा, फिर ये ईफोर्स के हेडिंग में जाएगा या फिर किधर जाएगा। तो जब तक तुम वो 15 मार्क का सम 3-4 बार सॉल्व नहीं करते, कोई भी सम 3-4, तब तक यू वोंट गेट द ग्रिप ऑन द हैंड कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है करके। वेयर आई फेल्ट डिफिकल्टी इन एमसीक्यूज इन टैक्सेस, टैक्सेशन में एमसीक्यूज जो थे वो काफी डिफिकल्ट, बिकॉज एक भी मिस्टेक हुआ एमसीक्यू नहीं सॉल्व होते थे। सो आई वॉज प्रिपेयर्ड कि अगर एग्जाम में एमसीक्यूज नहीं, या फिर कहीं एमसीक्यूज या तो फिर कहीं पे भी टैक्स लाइबिलिटी या नेट लाइबिलिटी निकालने का आएगा, आई वुड डू दैट इन एंड अगर टाइम मिला तो, बिकॉज दैट विल इवेंचुअली ईट माई टाइम। पूरा टाइम वेस्ट होगा, मोरल मेरा डाउन हो जाएगा अगर, तो बहुत डिफिकल्टी होगी पूरा पेपर खत्म करने के लिए। सो आई प्रेफर्ड कि वो मैं एकदम एंड में ही रखूंगी अगर कोई भी नेट लाइबिलिटी का क्वेश्चन है तो, या फिर टैक्स लाइबिलिटी निकालने का क्वेश्चन है तो। दैट वाज माय स्ट्रेटेजी फॉर सॉल्विंग दैट पेपर एज सच, बिकॉज मुझे वो ऐसे मेरे को डिफिकल्ट लगता था टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, बिकॉज एक भी मिस्टेक हुआ तो पूरा सम गलत। बट इवेंचुअली पोस्टिंग के मार्क्स मिलते थे, मेरे प्रोफेसर ने भी बोले थे कि पोस्टिंग के मार्क्स मिलेंगे तुम्हें, सो उसका कोई इशू नहीं है। तो एज सच पूरा 100 मार्क का सॉल्व तो करना ही है, बट फ्लो आगे पीछे रखना चाहिए। पहले जीएसटी कर लिया, या तो फिर पहले टैक्स, अगर टैक्स स्ट्रांग है तो टैक्स कर लिया, बीच में एमसीक्यूज डाल दिए ऐसे। And then for fourth subject costing, so for costing I again made a formula book, like formulas लिखे थे सारे एक जगह पे, and वो formulas revise करते थे and वो sum solve करते थे। That was the only thing for costing, because costing was quite good for me। and costing में भी as such practical होता है, तो formulas are the only important thing, and वो हर chapter उसमें बहुत important है, तो we cannot skip any chapters from them। and the most important is audit from the day one when I started audit is I felt it difficult। तो ऑडिट में ऑडिट क्रैक कैसे करना है was the thing। I asked my ma'am कि how to crack audit। My ma'am was like study from day one। So from day one I was like audit I used to revise daily। So जैसे जैसे क्लासेस में पोर्शन होता गया I used to read that at home। तो ऑडिट लाइक इवेंचुअली एक बार रीडिंग आई, सेकेंड टाइम रीडिंग आई, थर्ड टाइम रीडिंग आई, तो मेरे रिविजन लाइक सेल्फ स्टडी पीरियड तक वो ऑडिट 2-3 बार तो रीड कर ही लिया था मैंने मॉड्यूल से पूरा। सो इट वाज क्वाइट गुड कि नहीं, आई कैन नाउ हैव द कॉन्फिडेंस कि आई कैन राइट द पेपर ऑडिट का। फिर रिविजन टाइम था तब भी रोज डेली विद अदर सब्जेक्ट आई यूज्ड टू अकोमोडेट ऑडिट का 1 hour 2 hour डेली बेसिस पे। फिर ऑडिट के भी बहुत एमटीपीज आरटीपीज रीड किए और देखे, सॉल्व किए। अभी एक टाइम होता है जब यू डोंट गेट टाइम टू सॉल्व एंड लाइक राइट ईच पेपर। 3 घंटे बैठ के पेपर लिख नहीं सकते, तो 2-2 3-3 पेपर तो लिखो, बट अगर और पेपर सॉल्व करने हैं तो व्हाट आई डिड वाज मैं वो स्क्रिबलिंग करती थी। स्क्रिबलिंग एज इन लैपटॉप या फिर फोन में वो पेपर उठाया, क्वेश्चन पेपर पे ही एमसीक्यू टिक टिक कर दिए, आंसर्स क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आंसर्स हैं अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स, तो उसको पता है कहाँ पे कौन सा सेक्शन कोड होगा, इसका कंक्लूजन ये होगा, तो वो उससे उधर ही मैंने मार्क आउट कर लिया एंड फिर सजेस्टेड आंसर से चेक कर लेती थी। तो एटलीस्ट 3 घंटे का पेपर जो था वो 1 घंटे में सॉल्व हो जाता था अपेरेंटली। तो दैट वाज माय अप्रोच फॉर ऑडिट एज सच। एंड देन द लास्ट वन वाज एफएम एसएम। सो फॉर एफएम एंड फॉर एसएम, एफएम वाज अगेन formula based chapters, so for like I used to write down the formulas रिवाइज करते रहो जब तक वो याद नहीं है, तब तक करते रहो फॉर्मूला रिवाइज। एंड देन उसमें भी रेशियो एंड लेवरेजेस, दिस चैप्टर्स आर फिक्स, आते ही हैं 5-5 मार्क के। सो अगेन एमटीपी आरटीपी इज द की, उसको करेंगे तो वो वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस तुम लोगों को एग्जाम में आने वाले हैं। सो जस्ट गेट अ ग्रिप ऑन दोस क्वेश्चंस। एंड फॉर एसएम डू राइट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स या फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कोड किए ना, या खुद से बना के लिखे, इट इज बेस्ट। प्रैक्टिकल लाइक एग्जाम्पल लिखना वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एसएम। एंड इन एसएम द 3 पैराग्राफ फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सो इन एसएम आई लाइक मैंने यूट्यूब वगैरह से देखा था कैसे लिखने हैं एसएम के आंसर्स,
मोस्ट ऑफ देम सजेस्टेड कि जो मेन आंसर होता है तुम्हारा, कि ये थियरी है, माइकल पोर्टर की थियरी है, किसकी भी थियरी है, जो भी है, तो फर्स्ट पैरा में ही लिखो दिस इज द थियरी ऑफ दिस पर्सन ऐसा। तो जो मेन आंसर है तुम्हारा, आइडेंटिफिकेशन या कंक्लूजन जो हम लिखते हैं सब जगह पे, वो यहाँ पे एसएम में फर्स्ट पैराग्राफ में आएगा। तो वैसे करके यू हैव टू write down in a 3 paragraph format, but the answer should be first. So yes, this is how I covered mostly all the subjects and most of the doubts जो थे वो मैंने cover कर लिए हैं। अगर कुछ हो तो बोल सकते हो आप मुझे। Yeah, thanks a lot, Palak. So it was a very helpful and very key inputs which you have shared. I guess all the participants would agree for that. And I would request all the participants if they have any further questions with respect to CA Foundation and CA Intermediate questions. So Palak is there. She'll answer your queries. However, even while going through the question and questions raised by the participants during the registration, I have also observed that most of the questions have been answered, but still we are open. So over to the participants, they can start their questions if they have, if any, in next 1 or 2 minutes, or else we can move ahead with the third and the final part of our webinar. हेलो। Yeah, hi Raj, please go on. मॉक पेपर्स जो आईसीआई के जो मॉक टेस्ट रहते हैं वो इम्पोर्टेंट हैं क्या? लाइक उधर जाके जो लाइब्रेरीज रहते हैं आईसीआई के, जो सजेस्टेड लाइब्रेरीज रहते हैं, उधर जो मॉक पेपर्स होते हैं आईसीआई के, वो इम्पोर्टेंट रहेंगे क्या अभी लिखने के लिए? एमटीपीज तो यस इम्पोर्टेंट है बहुत, लाइक मैंने उसी से पढ़ा था, बट लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज सजेस्टेड आंसर्स, एमटीपीज सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो सीए वेब करके एक है, सीए स्टडी वाला करके एक है, गूगल वेबसाइट है, गूगल पे सर्च किया तो मिल जाते हैं, तो लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है। बट यस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड एमटीपीज 2 अटेम्प्ट तक सॉल्व किया तो चलता है, बिकॉज 4-5 एमटीपी हर अटेम्प्ट में 2 एमटीपीज निकलते हैं। तो जस्ट डू ऑल द एमटीपीज, बट एट द सेम टाइम पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो एक्चुअल एग्जाम पेपर्स होते हैं, लाइक हर अटेम्प्ट के, लाइक जैन हो गया, सितंबर हो गया, 2024 के हो गए, 25 के हो गए, तो वो क्वेश्चन पेपर्स भी करने के, बिकॉज क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चंस एंड एमटीपी के थोड़े से अलग होते हैं। आई फील एमटीपीज आर स्लाइटली इजियर बट एग्जाम्स आर स्लाइटली डिफिकल्ट। तो थोड़ा सा लाइक होता है बार रेस, बट यस एमटीपीज डू वर्क अ लॉट। Hello, Palak. Actually, I had a doubt कि आप law का like which faculty you used to refer for law specifically? मैंने कोई फैकल्टी ऐसे चूज नहीं की थी, बिकॉज लाइक जो मेरे क्लासेस में सिखाया था वही प्रेफर किया था, बिकॉज फिर वो क्लैश होता है दो फैकल्टीज का अगर सीखा तो फैकल्टी तो क्लासेस की थी, बट आई हैव हर्ड मेरे फ्रेंड्स के थ्रू कि शुभम सिंगल करके है एक सीए बडी इन यूट्यूब जो अच्छा सिखाता है लॉ, तो यू कैन यूज इट लाइक इन दैट मैनर, वेर एज ऐसा तो कोई चूज नहीं किया था मैंने। शुभम सिंगल भी थैंक यू। बेस्ट है और अंकिता पटनी मैम भी बेस्ट रहेगी फॉर लॉ। फॉर लॉ, लॉ के लिए लाइक आपने जैसे बोला 3 पैराग्राफ्स में, वो वैसे ही फॉर्मेट में लिखना चाहिए या पैराग्राफ फॉर्मेट भी चलेगा? पैराग्राफ चलेगा, बट एज सच मोस्टली सब जगह 3 पैराग्राफ ही रिकमेंड करते हैं। लाइक केस स्टडी होता है ना अगर, तो प्रेफर 3 पैराग्राफ फॉर्मेट। डायरेक्ट क्वेश्चन है अगर तो वो पॉइंटर्स बुलेट्स में लिखते हो मोस्टली आंसर्स, हाँ। बट एज सच केस स्टडी के लिए 3 पैराग्राफ इज लाइक
कंपलसरी नहीं बोलूंगी, बट हाँ, वही सजेस्टेड रहेगा मेरे साइड से। ओके, थैंक यू। वेलकम। So thanks Raj, Deepali and Neha for raising your queries, and thanks Palak again for giving a satisfactory answer to them. So any further questions from any other student, please? Yes, Deepali, you can also share something about the intermediate course that you want to share. Actually, right now I am preparing for my CA final. But when I was in intermediate, so at that time I was going through lots of problems and many issues were there in my family. So when I was appearing in 2020 for law, मैंने कभी आई एम सेइंग दैट मैंने कभी लॉ की बुक ओपन भी नहीं की थी। मैंने बुक में से एक मैं ऑपोजिट साइड मोटिवेट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने बस जितने भी थे ना यूट्यूब में, अंकिता पटनी मैम के जितने भी आप सर्च करना, वो सारे वीडियोस, जितने भी रिवीजन वीडियो उसने आज तक ना डाले थे ना, वो चाहे पुराने हो नए हो, मैंने वो सारे देख लिए थे। एंड लिटरली उस टाइम वो पेपर इतना हार्ड था कि मेरे ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड्स ने तभी गिव अप कर दिया था, उसके बाद उन्होंने कभी सीए कंटिन्यू नहीं किया था। बट इन दैट के तब मुझे उसमें 62 मार्क्स आए थे। मैंने बुक ओपन भी नहीं की थी, बट वो मैम इतना अच्छा सिखाते हैं, हाउ टू राइट पेपर, आंसर कैसे लिखा जाता है, वेयर यू शुड यूज बुलेट, वेयर शुड यू राइट पैराग्राफ, वो बहुत अच्छे से, इनफैक्ट आपको सारे सेक्शंस भी याद रह जाएंगे। वो इतना डिटेल में इतने अच्छे से सिखाते हैं कि ऐसे तुम मुंह बोल के ऐसे बोल सकते हो सेक्शन 1 ये, सेक्शन 2 3 4 5 कंटिन्यूस मैनर में। So I would recommend that you should first go through Ankita Patni ma'am, or as she said that CA buddy is also better for that. बस मुझे यही शेयर करना था। क्या एक बार जाके अंकिता पटनी मैम की वीडियो देख लेना। Okay, thanks Deepali for sharing your inputs. So basically what Deepali was trying to say is that the lady which she was referring to, Ankita Patni, you guys can just check it out, her YouTube channel, and if you find comfortable, you can go for it. For her, she was a very important thing, and she's as she is mentioning that during the attempt where the paper was so difficult at that point of time, also she has managed to score exemption in that subject. So with this, we'll stop the CA intermediate part of the webinar, and we'll start with the third and the final leg of our webinar, that is for the CA final students. So before going to the webinar, I would just like to give a small introduction of our speaker for this part of our webinar. That is CA Shruti Suresh Nakwa. She has recently cleared CA final in September 2025 with All India rank 50. So I would just like to give a congratulations to her once again. So going forward, as per her academic background, she has also done BCom graduations from Mumbai University, and she has also ranked second in CA Inter. However, it was in the Navi Mumbai region, so that is also a great achievement. And in the CA final, she has also scored exemptions in 5 subjects. So going towards the professional experience of hers, she is working as an article assistant at Deloitte, and her total professional experience is of 2.5 years as on date. Her areas of expertise are into statutory audit and tax audit, and the tax audit is the part where she is most passionate about. About her achievements and recognitions, she was felicitated by Navi Mumbai Vikasa Group for her second rank in the CA intermediate in the Navi Mumbai region. She is she has been a speaker to this event with the goal that she is also of the view that uh, ज्ञान बांटने से पड़ता है, and she is ready to support all the CA aspirant students who need guidance, and she will be there for their support. So with this, I would be welcoming CA Shruti Nakwa and requesting her to take up the webinar ahead. So welcome CA Shruti. Hello. Yes, thank you, Sagar, for the kind introduction.
Myself, CA Shruti Nakhua, All India rank 50 in the September 25 attempt. Okay, so first of all, I'm very glad for the opportunity, the forum which has given to me to share my journey with you guys so that it might be helpful for the people who are giving finals, maybe in the Jan attempt or maybe in the coming attempts. So I would like to share my journey. My approach for sharing my journey would be little different from what Palak did. So I would be first of all sharing in general, and then I'll target the each and every subject, how to deal with each and every subject, and what kind of preparations you need, because the strategy for each and every subject would of course be different. So one strategy would not apply for all the subjects. So coming to the my attempt was originally held to be in the November 2025, as we all know. But ICA recently declared that it is going to hold three final exams, which was not there earlier. And this notification was released in the first week of April. So as per my plan, as per my strategy, as on April, I thought I still have 2 more months to prepare and then I'll go on the study leave, because you have to plan leaves in the articleship also. You have to take leave of the manager. You can't leave in between. And since I was in the audit department, April is the busiest season in the April or during the articleship. So when the notification was released, there were like two options for me. So I was eligible as per the ICI notification. I was eligible for the September attempt and also for the January attempt. So it was upon me whether I have to give September or January. But so it was very difficult and very confusing for me to decide whether to give September or whether to defer and go for the January attempt. But I decided to go for September. So exactly, I didn't even know if I had exactly 5 months, because the notification was released in the April first week, and from if you count from April to September, it was less than 5 months because first week had already gone. So sharing my journey, first of all, I would like to say that whenever you are starting with your study leave, you should ensure that your portion or the learning phase has completed before that or till that. You cannot learn or start with some new subject afresh during your study period. So one thing which motivated me to go for September attempts was that I had completed all my lectures, all my learning from the tutors. It was completed till April. So I was pretty much sure that I know what's there in this subject, what's going on in the each and every subject. So yeah, one thing I would like to tell you all, that people feel that CA final is difficult. So it's not difficult, it's just lengthy. The portion is very vast. So you need a proper strategy to cover that portion. What I did was I aimed for the four revisions, excluding the 1.5 days exam revision. I planned for four, and for each revision. So, for example, for first revision, I allotted 10 days for each subject, and then I would go on reducing the days. Like for second, I kept it 7 to 8. For third, I kept around 5, and for fourth, I kept 4 to 3 days, depending on the subject. Like if the subject is my stronger subject, I would allot it 3, and if it's a subject like DT or audit, I would allot it 4 or 5. So that depends on the subject. Starting off with the first revision, so you have to cover each and every question, each and every book you have during your first revision. You might give 10 days, 11 days, that is fine, but make sure that you have been through the portion once. So, what you can do is, so I'll cover the module side by side. What I did was, of course, I bought the tutors and different faculties lecture, which I'll share afterwards. So my approach was, I started with the books which I have bought from the tutor or other faculties. I went to read theory, then I went to read or solve the questions. And what I did for module was, first off, I solved all the questions for the faculties, and then I went and
saw the module. So of course the questions are similar to what the faculties provide. So my approach for module was that I used to see the questions, and then if I see that this question has been repeated or it's already there in the faculty's book, I would cut that question or just write that it is same as the faculty's book. So then the questions in the model would get shortlisted. So the only the questions which are not there anywhere, that question would be remaining. So for that question, what I did was I used once your theory is done, you get a knowledge of what's going on. So I tried to solve that question by applying the theory and to know whether I'm able to solve a question that question or not. So if I'm able to solve like it's an easy question, so I would just cut that question and mark it like it's not that important to do it again. So some questions were like that, which are not important or which you can solve easily by applying the normal theory. There were some questions which were difficult or which require one more practice. So I used to mark that question in the module. I used to fold that pages in the module, and I used to write the page number in my index of that chapter, so that whenever I'm doing the next revision, I only have to focus those questions from the module. So that's how I scrapped my module in the first revision. I never touched the module in the second or third revisions because with the time you don't have that much days, and the portion is still the same. So you have to cut short your portion. Um, so that was the general uh, thing which I did. I'll move to the each subject. So for first subject is all of course financial reporting, which is FR. So for FR, everyone knows that FR's portion is very much lengthy. The paper is not difficult. ISA doesn't release difficult papers. It's just that the papers are very much lengthy, so that the students are not able to complete it, and that's why student feels that the paper is difficult. So what you have to do is you have to practice the questions. I mean, by practice, I mean writing. It's not necessary to write each and every question, but just write the rough figures, whether you are able to solve or whether you are able to recollect what's going to be the next step. Just write the answers in rough and tally the answers with the faculty's book. So yeah, for FR, I would say that the more writing practice you do, the more it would be beneficial for you, because FR is all about solving the question and recollecting or knowing what's the going to be the next step, so that it saves your time during your exam and you will be able to complete your paper. For AFM, what I did was uh, I studied AFM from JKSE, so I relied on JKSE for AFM. I solved their questions. I solved their um. They didn't provide me theory, although I solved their questions each and every time I practiced AFM. Again, AFM being a practical subject, you have to write and practice each and every time you do AFM. So again, for AFM is full of formulas, as we all know. So during your first revision, you need to make sure that you prepare a formula list for the subject, even a small formula or even a general formula. You should write it down in your AFM book. I prepared my AFM formula book and I wrote each and every formula I know or formulas there been in that book. So AFM, I did that. And one more thing about AFM is most of the people ignore is AFM's theory. So what ICI been doing is that ICI ask 16 marks theory questions for AFM, and it's a compulsory question, so you can't even ignore it. So make sure that you take up theory in your first revision only, and do not delay of it. Do not delay it. So there's a theory book. Theory has been in the module, or you can take some notes which are available. Read those theory. There are majorly 4 to 5 chapters which are very important in those theory chapters. Uh, you can have a grip on that subject chapters, and then because ICI has a pattern of asking theory question from each and every chapter, so it's not necessary that ICI asks chapter theory question from only one chapter. It asks from multiple chapters. So, and it is of 16 marks, so you can't even ignore those 16 marks questions. So one thing is also theory is also important for EFM. Moving on to the audit.
as we all know, audit is for me at least, it was the most difficult chapter. I would say it was my weakest chapter. For audit, what I did, my approach was, it would take me some little time to know what's going on in audit. So what I used to do is watch YouTube revision lectures of various faculties, to understand what's really happening and to know like हाँ मैं कर सकती हूँ. If you know what's happening or you know the context, then you can even write it in your own words. So that is what helped me watching on YouTube. Second thing in audit is, you read the theory and then it's very important to solve the questions of the audit. Audit के questions, it's basically some questions are case study based, some are directly questions. So direct questions you can approach it directly, but the case study base you might be confused depending. I mean, you will feel that it is of this essay or it is of another essay. So it is important to read those questions very much and to have a clear understanding of which essay you have to write, because ICI have a standard answer. So they'll just check whether you have quoted that essay or not. So one thing in audit is that is very much important is quoting the right essay and knowing that it's not necessary that only one essay to be quoted. There might be times where it is more than one essay or more than one SRE. So you have to quote it all. So that is important to solve the case studies based questions. Um, Also, one thing for audit, I would like to say that normally audit requires more revision than the other subject. So what I did, I planned 4 normal revisions for audit like other subjects, and I planned daily revision from my third revision till my fourth revision. So I used to daily revise audit for 1 hour, 1.5 hours, or just go through the important subjects or important topics so that I have a grip on it. So that's how I practice. And for me, what really helped me to gain confidence in audit was I even used to write audit in I used to literally go writing audit in my notebook, writing practice of the audit. So that really helped me to remember things, to retain the things as soon as I see the questions. So yeah, I'll suggest some of you to even write audit because it might help you all. Yeah, for audit, that was it. For DT, I would say that DT is a very large portion, a very large subject to cover. What I did for DT was first of all to break down the full module. I mean, the faculty which I took, it had 3 books of DT theory. So I broke down the full DT into 3 parts. Then I took each part. First of all, the sums part. Another is the whole assessment procedure, and the third part would be international taxation. So I broke it down to 3, and then I would take one part and do its theory, making sure that the theory is perfect, and then I would go on and solve the questions of that. So for DT, this was my approach. For people ask me whether to write all the sections or remember all the sections. So let me tell you, it's not that much important to quote sections. As Palak rightly said, it's not important to quote a section, but if you write a wrong section, you might lose some marks. So when you're not sure of that section, then it's not necessary. Then I would suggest that you should not write it. Yeah. For IDT, what I did again, the approach for DT and IDT was same. I did first you should go through whole the theory and then you go on practicing sums. One thing I would like to add on, like if we see the first and second revision, you have to cover whole portion. I mean, you cannot shortlist some questions in your first revision and do only the important ones in your second revision. You have to cover each and every question in your first revision as well as in your second revision. And from second revision onwards, what I did was I also did past 3 attempt RTPs and previous past papers. Um,
For MTPs, I didn't get much time to cover past three attempts, but I made sure that I covered my attempt MTP and the previous attempt MTP, because we know MTPs are a test are a two question papers. So I didn't get much time to cover each and every attempt. But covering past papers, three attempt past papers and RTP and past papers are very important. Um, so that I started to do RTPs and MTPs during my second revision. Also during my second revision, uh, what I did was I started shortlisting or marking important questions for my third revision. So during my second revisions, I have marked important questions in FR or in AFM, and I shortlisted questions which I need to do for my third revision. So during my third revision, what would I do is, first of all, in each and every revision you have to read theory whole, and every time you have to, in each and every revision, theory is compulsory, theory is must. You only have to shortlist question. So during my third revision, I only solved those shortlisted questions which I have marked during my second revision. And what I did, once I have a little grip on some questions, I would remove them from my important questions list, and I would further shortlist down for my fourth revision. So that's how you cut down your portion, because you don't have much days, and of course the portion is still the same. So that is one thing which I practice. Um, and um, for for each subject module, like I said in FR, I used to do that only. You see module once in your first revision, mark them, see the questions. If you feel it's already been repeated or it's in your faculty's book, then cut it down. And for the other questions, mark it down or write in your index book that you have to do only these questions. So while your second revision, you should only focus that questions, and ensuring that your module is also done. I would like to pay more focus to how to approach for the paper. So what I did was, you have 15 minutes reading time before you start your paper. So ensure that you use that time very properly. You don't have to see the compulsory question in that 15 minutes time. You have to decide which questions are you going to attempt in your the other questions. The out of five, you have to attempt four. So decide which are your best four questions which are going to attempt, and in which preference are you going to attempt. It's not necessary to attempt question in the preference which is in which it is given. You can decide your own preference. So decide that which are your best questions in which you will gain confidence, and just mark it. Like Palak said, it's okay to keep marking on the question paper. Even I did that. So I used to mark on question paper that I'm going to attempt this, I'm going to attempt that. So once you do this, and even if you still have some time, even after doing this in your reading time, what you can do is you can start reading the MCQs. You can read the case study base, and then you can read the questions, and you can easily have, I mean, you don't get much time, but you can read one case study whole. So yeah, and then once your actual time starts, do solve the best two questions which you have marked earlier. Solve two or best three questions which you know कि तुमको confidence आ जाएगा, and then move on to the MCQs. So for then move on to MCQs and allot 30 to 40 minutes maximum to MCQs, and then again come back to the question paper where you feel like, okay, these questions I can do now. So you'll gain more confidence and you won't even fear also. And I would also like to add about the case MCQs. So for people will ask, I mean, from where to do case-based MCQs. So ICI has released its case study booklet. So you can study for each and every subject. ICI has case study booklet. You can practice that MCQs. ICI has very good MCQs. Plus, you will get new MCQs from the RTPs, MTPs, plus, there are some other faculties have also released the MCQ book, so you can practice MCQs from that. But my preference would be first always solve ICI's case study booklet for MCQs.
And then if you have more time, you can practice another faculty's booklet. So that is for the MCQs. One thing which most students in the final are confused about is IBS. I mean, what to prepare for IBS, how many days to give to IBS. So I allotted 3 days during my study leave of 5 months to IBS. So in those 3 days, what I did was I ensure that I have all the resources, I have all the material from which I am going to see the answers or I am going to find for the answers. So what I did was, first of all, I you have ICI has released the 2 volume for IBS, so make sure you have both the volumes. Then make sure that you have the modules of each and everything. You have the modules or your faculty's books in front of you for other subjects of FR audit and all. And then what you have to do is there are some Telegram channels which provide the indexes of each and every module. So what I did was I took a print of detailed index. They provide a detailed index of each and every subject of module. So I printed them all, and then I read that index twice or thrice to know which are the important ones. And once I know that this is important, I would highlight that in my index only. So whenever the next time I search for anything that would come into my eyes, Turant and Pivot, you can search for the page number in the module. So this is the one thing for IBS modules. And since we are allotting 3 days to IBS, you don't get much time to prepare for all the case studies. First of all, ICI never repeat its case study. So even if you try to solve each and every case study, it is not going to come in your exam. So what the approach I followed is I tried to solve around 20 to 30 ICI case studies and not all, to know what exactly the approach is or what exactly the type of the question ICI is asking. And then I solve the past RTPs, past papers, MTPs. In this, you can solve multiple papers, so you have a knowledge of how ICI is asking. And for IBS, what of the approach I followed is first read the questions or the MCQs, and then go on to case study. In IBS also, during those 15 minutes, decide which case study are you going to solve. So it's not necessary, there is no compulsory question in IBS, you just have to decide the case study. So based on the MCQ or based on the descriptive question, decide that is this going to help you score good marks, because if you see the MCQs are direct MCQs, you can score good marks in them, and you now you know that you have to solve this case study. So do this in your reading time, and then read a question in depth, and then move on to case study, because you won't have time to go through the case studies and then go to the questions and then again go to the case study. So first read the questions and then find it in the case study. One thing which I know that it's not necessary to read the whole case study. I mean, you can find some paragraphs relating to that question. And I just read that paragraph and I was able to answer the question. So it's not necessary to read whole case study. That will save your time. For IBS, I did this. And for people who wanted to know for law and costing, what I did was, again, for law, there you have a detailed index. Go through that index once or twice, and then you will know and mark important or highlighted ones, and then you will know where is exactly the topic in the module. So for law, you can do that. For costing, what I did was costing you have sums. So basically, I took costing module and I stick the notes like sticky notes from wherever there were sums. So if there are sums of operating cycle, so I took that page and I used to stick a sticky note and saying it a operating cycle. So if there's a sum, and basically ICI has a habit of asking the same questions or same kind of questions. So there are no new questions. So even if you trace the question from ICI module, you will able to solve it based on that.
but it is important to know where the question is actually in the module. So that saved my time rather than searching it in the index. I stick the sticky notes into the module itself. So that was my approach for costing. And mm, if you want to know the lectures which I bought from where I learned, is I would like to share that also. For FR, I saw Bhavik Choksi sir's books. For AFM, as I mentioned earlier, it was from JKSE. For audit, I referred Shubham Keswani's books. For DT, again, it was from JKSE, sir named Agam Dalal. But I only referred a theory of that, sir. For questions, I referred Bhanwar Borana. For IDT, it was again JKSE from Nitin Nahar. So that basically sums up my journey in of my CA finals. If you guys have any questions or if you want any notes, I still have all of that. You can please connect. Yeah. Yeah, thanks a lot, Shruti. So thanks for giving your insightful views and inputs on the CA final course and how did you took it head on and got the AIR 50, which is a great achievement. So congratulations again for that. So now over to the participants. If anyone has any questions, the forum is open to all. Yes, Dipali, you can go on. Hello. First of all, congratulations to Shruti. And Thank you. actually, I'm not able to manage my paper number 6, that is IBS, because I gave my final first group 1 year ago. And now I'm not able to recall that subjects and even that law and cost. We don't have any knowledge regarding that. So I'm getting attempt just because of this IBS paper. So it will be very helpful if you guide me for that paper. Okay. For law, the strategy would still be the same. I mean, take a detailed index and just go through that index once or twice. So once you read it now, you will have a little knowledge of where that topic is. I mean, that's what I did because even I gave my law and SPM even 1 year before I did my CA finals. For costing, I would say that I didn't practice each and every sum. What I did was I relied on the ICI. I mean, I took a risk that I know that questions are going to same or it will be of the same kind. So, like I said, for costing, no need to practice sums in differently, but just know where the sums are or what is the strategy. Or one thing you might do if you have time is go to the costing module. You can see the sums. You can write in pencil or format. Like the first step is this, first second step is this, third step is this. Like the process in which you solve the sum. सो एग्जाम में फिगर आउट करने का टाइम जो होता है वो कम लगेगा यू नो दैट दीज आर स्टेप्स यू नीड टू फॉलो एंड देन यू कैन जस्ट अप्लाई दो स्टेप्स in your exam for costing sums. And for theory, it is again the same detail index. I would say prefer that. You would come to know where the topic actually is. For audit and the first group which you're talking about, for FR, I would suggest that again, the ICI has a habit of asking the repeated questions. ICI doesn't ask new questions from the FR, audit, or EFM. So I would say that if you have time, you could watch the revision lectures of each and every chapter. Um, to have a knowledge or you can or if you have the theory book just go through that theory book and know how to apply those theory in your practical sums even if you might solve few sums of FR and AFM to gain a little more clarity so that you don't waste your time in figuring out what's to be then what should be your next step. For audit the approach would still be the same because there's no need to remember audit.
You just need to know where the topic is from. So read index, or you should read the topics once, from which essay it is, or where it is exactly, or which question are they exactly asking. Because it might happen that you know the essay, but you don't know which topic exactly they are asking. So it's better to quote two topics also. I mean, if you have time, you can quote two topics to be on the safer side. But for law course, for law and audit, the strategy would be still the same. And for FR and AFM, you can, like I said, if you prepare the formula book for AFM, the formula book covers everything. So just take that formula book along with you, and then you can see the formulas and you can apply that formulas also in your question. And for sums, I mean, if you want direct and direct sums, what you can do is, if you have books, you must have books, right? So you can see which questions have been asked. I mean, you should have knowledge that this question is from this chapter. So you can search those questions in those chapter, and it would save your time. No need to practice sums again and again, because I say ask us the same question. There are no new type of questions in IBS specifically. And for FR is also the same. No new type of questions. The questions are same which are from module. So it's better to see the faculty's book or the module for those. No need to practice again and again. But you should have an understanding that this question is from which chapter. I mean, वो एक understanding ले लो कि कौन से chapter में है. So वही chapter में ढूंढना है. So you don't need to find that question in another chapter, because that would again waste your time. I hope it helped. Yes, thank you. Any more questions from the participants? You can go ahead, please. We will wait for a minute and then, yeah, Harsh, please. Actually, so I had questions for the inter, like not final, so I can wait if Fine. any Palak, session. are you there? I'll just check with the speaker for the CA Inter. So, Palak, are you there? Yes, sir. Yeah. So, Harsh, you can ask the question. Palak is there. She can help you. Thank you. Actually, I joined late, ma'am. Actually, I want to know कि like how did you plan? Like आपने कितना महीना रखा रिवीजन के लिए? Like what date you set to complete your portion? कि 3 महीना पहला पेपर से पोर्शन हो जाना चाहिए या 4 महीना? तो उतने टाइम्स ऑफ रिवीजन आपने कितने रखे? और what is an ideal number of times revision you should do before giving the entire paper? तो मेरा स्ट्रैटेजी लाइक मेरे क्लासेस पे डिपेंडेड था टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज सिलेबस ही हमारा अराउंड लाइक 2.5 मंथ्स पहले खत्म हुआ, लाइक 2.5 मंथ्स था एंड सिलेबस खत्म हुआ था. सो उस हिसाब से ही फिर बाद में जैसे टाइम मिला, लाइक अराउंड 2 मंथ्स कंप्लीट थे एंड ऊपर 10 दिन मिले शायद कुछ, तो उसी में सारा रिवीजन अकोमोडेट किया. सो फर्स्ट आई स्टार्टेड की थिंकिंग कि लाइक मैं खुद से करूँ सब कुछ एंड मॉक पेपर्स की तैयारी ना करूँ. बट फिर आई वाज लाइक नहीं, मैं खुद से करने जाऊंगी तो मे बी शायद कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा. सो आई ट्राइड कि जो मेरे क्लासेस की मॉक टेस्ट की सीरीज है, लाइक मॉक 1 चल रहा था, मॉक 2 चल रहा था. सो मॉक 1 मैंने एज इट इज दिया, जितना डेज उन्होंने सेट किया था उतने डेज में. फिर मॉक 2 में लाइक उसके साथ साथ मैं अपना भी घुसाती गई, बिकॉज क्या हो रहा था, एक ही सब्जेक्ट दे वर गिविंग 5 5 डेज 6 6 डेज. तो अराउंड फर्स्ट रिविजन शुड बी लाइक 5 डेज ईच सब्जेक्ट, बिकॉज मैंने वही किया था. और उसमें भी इट वाज लाइक ऑडिट जो था वो मेरे को लग रहा था कि नहीं 5 दिन में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा करना. तो व्हाट आई डिड, मैंने डे 1 से ही लाइक जब मैं प्रिपेयर कर रही थी कोई लॉ सब्जेक्ट के लिए या अकाउंट्स कॉस्टिंग के लिए, तो मैंने ऑडिट भी स्टार्ट कर दिया था थोड़ा थोड़ा, लाइक डेली बेसिस पे. तो लाइक एक चैप्टर हो गया, दूसरा चैप्टर हो गया, तो स्टार्ट तो कर दिया था बीच से, लाइक 1 2 पेपर हो गए उसके बाद स्टार्ट किया था ऑडिट के लिए. तो इससे मेरा मॉक 1 में पूरा सिलेबस खत्म हो गया मोस्टली. सिर्फ अकाउंट्स का मेरे एएस बाकी थे कुछ, वो मैंने मॉक 2 के टाइम पे, तो इट वाज माय मॉक 2 एंड विच वाज अराउंड 3 डे ईच सब्जेक्ट. सो आई हैड 5 डे फॉर लाइक मॉक 1 ईच सब्जेक्ट. अराउंड 32 डेज का वो था मॉक 1, लाइक रिविजन 1 पूरा मेरा. रिविजन 2 वाज अराउंड 3 डे ईच सब्जेक्ट. एंड देन बाद में 10 डेज या फिर 9 डेज कुछ बाकी थे मेरे
फॉर थर्ड मॉक, बट मैंने फिर थर्ड मॉक नहीं दी एंड आई जस्ट स्टार्टेड रिवाइजिंग खुद से. सो मेरी थर्ड मॉक के टाइम पे लाइक मॉक 1 मॉक 2 अच्छे से प्रिपेयर किया. मॉक 2 में लाइक रिविजन 2 में मैंने मॉक 2 क्लासेस की भी दिए, साथ ही साथ खुद से घर से स्टार्ट किया लिखना. तो मैं आईसीआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाती थी, क्वेश्चन पेपर उठाती थी एंड सॉल्व करती थी खुद से. सो ऐसे मैंने 4-5 पेपर्स लाइक करती गई 2-2 3 दिन पेपर करती गई हर एक सब्जेक्ट के लिए. एंड देन रिविजन 3 जो था मेरा वॉज अराउंड लाइक 1.5 डे वाला ईच सब्जेक्ट, जिसमें आई ट्राइड कि सब कुछ पोर्शन एज सच लाइक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए हुए हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, वो एक बार रिवाइज करो एक दिन के अंदर अंदर. एंड बाकी जो 0.5 डे बच रहा है उसमें वापस पेपर सॉल्व करो, या फिर कोई दूसरा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है तो वो कवर करने की कोशिश करो. तो या दैट वाज माय अप्रोच. Yeah, thanks for that. And one last question. इत- कितना टाइम यू कैन थिंक आप दिन में आपको देना चाहिए फॉर इंटर, लाइक 6 hours, 10 hours या 8 hours ऑन एवरेज? इट्स लाइक मैंने ट्रैक नहीं रखती थी मैं, बिकॉज स्टार्टिंग में ट्रैक रखती थी तो फिर बाद में बुरा लगता था खुद से कि बहुत कम टाइम दे रही हूँ. बट अप्रोक्सीमेटली फॉर मी आई यूज टू स्टार्ट, सबका खुद खुद का होता है लाइक टाइमिंग्स. सो आई यूज टू स्टार्ट बाय लाइक 8 o'clock 9 o'clock एंड यूज टू स्ट्रेच टिल रात के 12 o'clock. बट उसमें इट वॉज लाइक लॉट्स ऑफ ब्रेक्स, नैप टाइम्स एंड मेनी मोर स्टफ्स. सो अप्रोक्सीमेटली 12 घंटे तो होता ही था, 10 घंटे होता था, 10 घंटे अप्रोक्स. बट इट वॉज नॉट लाइक फुल फ्लेज. इट्स नॉट अबाउट अ टाइम, इट्स अबाउट क्वालिटी. तो क्वालिटी मेंटेन करने के लिए फिर आई यूज टू टेक नैप्स एंड ऑल. सो एज सच यू कैन गिव लाइक 8 to 10 hours ऑल्सो विल बी इनफ इन अ डे. लाइक मैं स्टडी लीव की बात कर रही हूँ, जब स्टडी पीरियड स्टार्ट होता है लाइक 2 month वाला, लाइक नो क्लासेस एंड ओनली स्टडी, then you can at least go for 8-10 hours. I got it. Thank you. Welcome. Thanks, once again. So, any further questions? We are already at the fag end of our webinar. So, if there are no questions, we can move towards the conclusion of the event. So, I guess we can move towards the conclusion. So, kudos to all the speakers for giving their valuable time today and giving guidance to the new and the coming CA aspirants. So I would like to call Mr. Anandama, CA Anandama, to give a vote of thanks to all the speakers, and then we can conclude with the webinar. Sure, thanks, Sagar. On behalf of BCF, I would want to extend our vote of thanks to all the speakers, distinguished speakers, I would say, particularly the NITA struggles, the rank holders did very well in terms of basically guiding. I think they were very passionate when they were actually speaking about how to go about it. And I'm sure that is going to really help the audience, the students basically to not only pass out, but I think secure rank for themselves. And that is, I think, certainly going to go a long way. All I would request the speakers is basically to switch on their video once, I'm sure we all want to see who are the rank holders. And I think when they meet you in one or the other functions, obviously they would want to feel proud about you. And I think ideally, when basically these kind of sessions are on, I think one should switch on the videos and not only the audio, because that really inspires a lot of people around. So if possible, I would ask Palak, Nita, and Shruti all to switch on their videos. I think when the students meet you ever, I think they should recognize you. I don't know whether they have done it. Yeah, they have done it. Yes, sir. The Yes. videos Great, are on. great. Yes, yes, yes. Sure, sure. So I think when we meet you guys, I'm sure like we are all going to be proud of you. And basically we would want from the BCF team actually that you guys also should do well. And even the students, I think you should try and basically fight for a rank just then basically passing it out.
and make the whole community proud. With that, I think we will end the session. Once again, thanks to all participants, the audience, as well as the speakers, and on behalf of BCF, this is how basically we conclude the session. Thanks. Yeah, thanks. Thanks, everyone. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir.